Hello, friends. Today we are going to discuss something about DNB in pediatrics. As you all demanded a video for the pediatrics, so here we are. We have two wonderful residents in the Department of Pediatrics at Swami Dayanand Hospital, Dilshad Garden in Delhi. So first, I would like to give a brief introduction of both the residents. So please, both of you, give your introduction. I am Dr. Prashant. I am 2023 batch DNB resident. Right. Uh, Currently going through my second year of residency, and Myself, Dr. Prince, Right. and now I'm in second year, primary DNB. Okay. And where have you been from? I am from Haryana. आप हरियाणा से हैं? My हरियाणा में? UG from Sayyid Hassan Khan Medical College, Government Medical College, Mewat. चलो, wonderful, wonderful. So this is about the brief introduction of our both residents. तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू हम डीएनबी पीडियाट्रिक्स के बारे में. सो या प्रशांत, सो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा. रेजिडेंट लाइफ इज एज इट शुड बी. रेजिडेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए. अपना टाइम नहीं मिलना चाहिए. टाइम नहीं मिलना चाहिए. रेजिडेंट्स का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हॉस्पिटल में स्पेंड होना चाहिए. Okay. तो वही होता भी है. फर्स्ट ईयर में जब हमने ज्वाइन किया था तो फर्स्ट ईयर्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ वर्क एंड हमें अर्ली मॉर्निंग आके सैम्पलिंग फाइल्स कंप्लीट हैं या नहीं है, एवरीथिंग इज रेडी फॉर द राउंड्स और नॉट, तो वो सब करना होता है. राइट. Second years में your responsibility remains that, but you also have additional responsibility like patient के लिए you have you have to be much more responsible. You have to follow up on investigations. You have to go through everything that your patient is going through properly, as per the treatment plan or not. Right. What the consultants have said during the rounds that has been executed or not. Right. So that has to be ensured. So it's a different set Obviously, of. Plus it is you a- have your thesis going on, and you have studies Right. that needs to be done. So it's एंड over आपका कैसा रूटीन रहा है? जैसे अब आप ज्वाइन किया, आपको कैसा फील हो रहा है कि यूजी के बाद एंड पीजी लाइफ में आप सर क्या फर्स्ट difference ईयर है? में तो मोस्टली आपका काम फिजिकली रहता है. सीनियर ने कंसल्टेंट ने फिजिकल बोला काम रहता है? यानी कि मोस्टली कैनुला सैंपल right, लेके right. जा रहे हैं, सैंपल हो रहा नहीं हो रहा. हम्म. अब में यानी दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि सैंपल क्यों करवा रहे हैं. बस सीनियर ने बोला ये Definitely. सैंपल करवाने हैं, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, Exhaustive हो ऑब्जर्व जाता है. कर रहे हैं हम हम्म. और काम कर रहे हैं. हम्म. और बाद में धीरे धीरे जैसे फर्स्ट ईयर एंड की तरफ आ रहे, सेकंड ईयर आया. जैसे सेकंड ईयर आया तो अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. तो हम जो हमारे सीनियर्स बोलते थे ये सैंपल कराओ, अब हम दिमाग लगा रहे हैं कि यही सैंपल क्यों कराने हैं, क्या क्या डीडीज हो सकती हैं, अभी क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए. अभी वो काम हम जूनियर से बोलते हैं कैनुला सैम्पलिंग करो. तो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि पेशेंट्स के वेरियस डीडीज क्या हो सकती हैं सिम्टम्स के बेसिस पे. तो अभी थोड़ा अभी और पढ़ना लिखना और ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाता है सेकंड ईयर में. हाँ, मुझे second लगता है में पढ़ना फर्स्ट ईयर शुरू हो में जाता है तो बुक खोलने का टाइम ही नहीं मिलता यानी होगा. ऐसे कैसे सेकंड ईयर में माइंड चलना शुरू हो जाता है, माइंड का इस्तेमाल कि वेरियस पेशेंट के बारे में हम क्या क्या सोच सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज सोच सकते हैं, Great, उसको great. कैसे अप्रोच करना है. राइट. सो थर्ड कंसल्टेंट आप बनने के आप राह पे हो गए हाँ. थे. लॉन्ग वे है लेकिन एक हिंट्स हम किस कैसे पेशेंट को अप्रोच करना है राइट. उस वे में सोचना ज़्यादा लग जाते हैं इन कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में तो मोस्टली फिजिकल वर्क भाग दौड़ है, सैंपल कर रहे हैं, पेशेंट को शिफ्ट करा रहे हैं, वाइटल चेक कर रहे हैं. यानी सीनियर्स बोलते हैं, कई बार गुस्सा भी आता है कि Right. सारा काम हम ही कर रहे हैं, सीनियर बोल के चले जाते हैं बस ये करो. तो बाद में रियलाइज होता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. राइट. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सिंपल ये है कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर्स ये दोनों का आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा. हाउ इज़ द क्लिनिकल एक्सपोजर? जैसे ओपीडीज हो गई, आईपीडीज हो गई, निकू पोस्टिंग हो गई, या पिकू अगर है यहाँ पे तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बाकी एक्सपीरियंस आपका कैसा है इसमें? निक्को पोस्टिंग तो सर ऐसा रहता है कि हमारा 3 मंथ्स का पोस्टिंग रहता है 1 ईयर में. 3 मंथ्स की पोस्टिंग होती है posting 1 ईयर one year में के लिए. निकू में. हाँ, तो Right. निक्को में पोस्टिंग रहती है उसी टाइम हमारा लेबर रूम में डिलीवरी वो सारा एक्सपोजर उसी टाइम पे होता है. और एक्सपोजर अच्छा है यहाँ हाँ, पे? एक्सपोजर अच्छा है. राइट. बहुत सारी डिलीवरी होती है, एलएससीएस नॉर्मल डिलीवरी, असिस्टेड वेजाइनली. हम्म. उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी हम अटेंड करते हैं फर्स्ट ईयर में. सब कैसा सिम्टम्स के बेसिस पे बच्चे को निक्को में शिफ्ट करना है नहीं करना. तो निक्को का एक्सपोजर भी अच्छा है. पिक्को एज सच ऑथराइज पिक्को नहीं है लेकिन इमरजेंसी है, पीड्स इमरजेंसी. उसमें हम सारे पीड्स cases- इमरजेंसी है हाँ, उसमें हम बेसिकली सारे हमारे cases देख पास, लेते और हैं. निकू पिक्को के- फैसिलिटी है हमारे हाँ, हॉस्पिटल. पिक्को के सारे केसेस हम ऑलमोस्ट वहीं हैंडल कर लेते हैं. राइट. तो आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं?
नीकू तो वी हैव अ वेल डेजिग्नेटेड नीकू Right. एंड उसमें वी हैव वेरी गुड मशीन्स, वेंटिलेटर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, वी हैव हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीजनेशन, वो उस तरह से वेंटिलेटर्स भी हैं हमारे पास, सोफीज एंड जो प्रोटोकॉल्स हैं दे आर वेल इन सिंक विद द करंट गाइडलाइंस. Right. Right. So we are up to date in the NICU system. Right. As far as PICU is concerned, apart from designation of a PICU, we are doing everything what we can do in a PICU. Right. We are ventilating patients. मतलब we are well We are versed. well versed with the work what is going on in PICU. We are doing everything. Just that we don't have a designated PICU as such. Right. Right. So we are doing that in a pediatric emergency setup. That's all. Uh, So we are getting good exposures of all the central lines, intubations, whatever we can. these all things Yeah. here you do in the second year itself. We can do in the first year also. We have good exposure if you are confident and you have good seniors with you, which we very luckily do have. Good. So we get to do a lot of things there. Very nice. So how is the teaching and the academics part? Because what we generally come to know in the DNB setup, apart from the MD, that the academics are not good, the clinical exposure is not at that level. So how you see yourself in getting the DNB course? I feel that clinical exposure or your academics do depend on how you take up things. That is one of the component of this particular statement, because just that somebody is teaching passively and you are listening, that doesn't make academics better. So, but we do have a very very structured academic calendar in our department. Okay. And our department is known for that particular thing in whole MCD and in Delhi, that Right. we have a very structured academic calendar, Right. and we follow it very strictly. Our HOD sir is very particular about this, Right. that we have to follow the academic calendar, and Right. we have all the, as per the required guidelines of the DNB, we have all the required elements of the rounds, academics. The rounds are classes. there, journal clubs are there, classes are there, Okay. seminar presentation is there, we have exams in between, we have mortality meets which are very rarely done in other departments, but we are doing it very regularly. Very nice. And we have a very proper structured way for doing those I academic think sessions. we are having the external noise, but Yes. it doesn't matter. Yeah. So we can keep the mic always close to us. So my next question is, how is the faculty in the department per se? If you say pediatrics, so how is the faculty? फैकल्टी इज वेरी गुड कोऑपरेटिव. हमें कोई भी डाउट आता है हम डायरेक्ट कभी भी किसी भी टाइम फोन करके Easily approachable है. इजीली अप्रोचेबल है. आप ऑफिस में ओपीडी में जा यानी ओपीडी टाइमिंग में पर्सनली जाके बात कर सकते हैं. Right. इन केस आप इमरजेंसी में Some mic थोड़ा सा पास रख लेंगे. आफ्टर 4 PM Right. तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. कभी Okay. भी हमारे कंसल्टेंट हैं, Okay. अमिता मैम है, 20 सर हैं. Okay. कभी भी कुछ भी कंसर्न हो आप बहुत पूछ सकते हो, तभी तुरंत बता देते हैं कैसे मैनेज करना है, क्या कुछ है. तो अप्रोच करने में ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं. तो फिर तो बढ़िया है, मतलब that is a good thing. Very approachable. Very approachable. Yeah, what happens in actually the medical colleges is, I think the approachability is there. There is some barrier between the professors, the doctors, the consultants, and the students. And it's not that they will just spoon feed. They will open up some arenas for you to read. रिसेंट गाइडलाइंस क्या है, रिसेंट आर्टिकल्स क्या है. They will try to inculcate that particular a sense of questioning. Right. That when you go for a patient to them, they will not simply say do this, do that, because that becomes that Spoon-feeding won't kind. that won't give us a lot of teaching. Right. So they will try to open up the areas for us, that why do you think that this is, or why do you think that this should not be. Right. So like that, it is very very helpful when you go to them. Great. So, what about the night duties and the workload here? Night duties are as per the roster, and the roster is very well Is it well very planned. hectic? Like in some medical colleges They're and all. supposed to be hectic ideally, because then only you learn, because that is the time you're alone. Okay. You are you have to manage on your own. In the daytime you have lots of people around here. In the Right. night you have limited people. Right. So that gives a confidence. Right. That is the one thing which makes you confident that you Obviously, can handle definitely, things. definitely. So it is supposed to be hectic, and sometimes it is. There's a season of things which comes. Sometimes fever comes, then acute gastroenteritis. Then in the winter season we have pneumonias, pleural effusions. So it's a mix of everything.
and we do get some period of the year where the casualties are little light, night duties are Right. little light, but most of the time It is. people do keep coming over the night. What I would like to ask next is how is the mess facility, the residence for the residents, obviously. That means the hostel facility for the residents and the mess facility. हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे यानी Hostel available हाँ है, हाँ right? तो यानी बाहर पीजीज भी हैं हॉस्टल फैसिलिटी भी है Okay. फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल में ही रहा था हॉस्टल में रहते हाँ कोई प्रॉब्लम जैसे कोई मेजर प्रॉब्लम, माइनर तो थोड़ी बहुत तो हो सकती है. माइनर प्रॉब्लम ऐसे एज सच कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हॉस्पिटल में ही आप स्टे कर सकते हो बाहर भी ले सकते हो Okay, मैस में डीएनबी कैंटीन है तो मोस्टली वहीं से Fine, लंच fine. डिनर और ब्रेकफास्ट वहीं से करो great to hear that. So our next round be a rapid fire round. Just we are going to ask in the one liners or the two liners with the residents what is their take on the questions. So my first question is, what is the most stressful moment for you during the residency? uh, to identify whether you need to admit a patient or not. That's very stressful Right. because it's a decision that you need to make. And So especially in when you are year, alone. first year when you are alone, you need to know that what should I do? Should I send this patient? That confidence needs to come. So Definitely. that is very stressful. When you're sending a patient, it is your responsibility because anything happens to patient after that, it's your responsibility. Rightly That said. you have send my child back, and now the child is coming with this. So that's a very stressful moment. आपके लिए भी डॉक्टर साहब सेम कंडीशन थी. ग्रेट. यस यस या आई थिंक यू आर वेरी राइट, राइटली सेड. क्योंकि अगर पेशेंट को कुछ भी होता है इन केस यू जस्ट मिस सिंस यू आर इन द फर्स्ट ईयर और कुछ सटल साइंस आप अगर मिस कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक रिस्क तो रहता है. बट डेफिनेटली जब आपके पास सीनियर्स होते हैं यू कैन ऑलवेज आस्क एंड इट इज़ हियर दैट यू आर हियर टू लर्न. और यही ट्रेनिंग का पार्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एनी बेस्ट पेशेंट स्टोरी टू शेयर विद अस? हाँ मेरे पास है ओके, थोड़ा जोर से डॉक्टर साहब. वी हैव पेशेंट कॉल Okay. मेरी कैजुअलिटी ड्यूटी थी नाइट में आया था 2 बजे ओके. पेशेंट इज इन गैस्पिंग स्टेट राइट. हिपेटोस्प्लिनोमेगाली था ओके. पेलर सीवियर पेल था ओके. ही हैव सीबीसी रिपोर्ट विद हिम Okay. एचबी वाज अराउंड 2.2 ओ माय गॉड. और सीवियर गैस्पिंग उसको हमने कोई सारा कोलैप्स था ओहो. शोक में था पेशेंट हम्म. वेंटिलेटर पे लिया यानी कोई हमें लग नहीं रहा था कि यानी बचेगा. होप है हम्म. अटेंडेंट को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रोग्नोसिस बैड है और उसको बीटी दिया हमने बाद में उसको यानी जब वेंटिलेटर से आउट हो गया नेक्स्ट डे और You have एचबी के बाद इम्प्रूव हुआ हम्म. और यानी उसका डायग्नोसिस हीमोलिटिक एनीमिया राइट. डीसीटी पॉजिटिव था तो उसको हमने बाद में इन्वेस्टिगेट कराया तो वो वोम एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया मिला ग्रेट. तो वो पेशेंट बाद में यहाँ से ट्रीट होके चला गया इम्प्रूव भी हो गया. हाँ इम्प्रूव हो गया चला गया बाद में ट्रीटमेंट के लिए बाद में फॉलोअप के लिए चाचा नेहरू और वेरी वहाँ नाइस, से गए वेरी नाइस. पेशेंट मैंने कांटेक्ट लिया अभी भी वो कांटेक्ट में है तो ये आपने सेकंड ईयर में किया इटसेल्फ? हाँ सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में बहुत तो बढ़िया. पेशेंट का अभी भी मेरे पास कॉल आता है और वो और जो पेशेंट का फॉलोअप है करवाता रहता है रिपोर्ट भेजता है तो It's very अच्छा लगता है important कि to follow up. हाँ Because you may not have all the facilities. It's not possible for any hospital to have all the facilities. But Right. we do have almost every facility. in Actually, Delhi. we have to exhaust our resources for Only the when sake you are of the done patient. with, your resources, then only you should send the patient somewhere, Right. and then you should follow up because otherwise you'll never know what happened to your patient. Great. पेशेंट अभी भी और कहीं हॉस्पिटल में दिखाता है तो अभी भी फोन आते हैं कि आपने इतने अच्छे से देखा है कि अभी तो हम this- किसी this हॉस्पिटल gives- में जाते हैं तो बिल्कुल. हमें देखते लगता है भी कि अच्छा नहीं. डॉक्टर का ये रूप भी है आप इतने अच्छे से देखते हो आप इतने अच्छे से मैनेज करते हो अभी रिपोर्ट फॉलोअप के लिए आता रहता है दिखाता है तो अच्छा लगता है तो Great story and great achievement also, and congratulations to you on the Thank you, diagnosis of the patient. So my next question is, you can skip the question, you can tell the answer. Who is your favorite consultant in the department? I would have skipped the question. Yeah, okay. आपने option दे दिया तो skip तो करना ही है. But yes, you can always tell. Sir, You can have many actually. favorite जो है ना वो it depends. I mean, we go to all the consultant. Right. We go to them for different purpose. Right. Like if you have a personal problem, we go to Amita ma'am. Okay, If great, you great, have great. something related to residents or something, so we go to Jaswant sir. Right.
And so for different purposes we go to different, we have different it's not I mean favorite hona as such, it's very बिल्कुल, difficult it is क्योंकि difficult सारे actually. criteria full करना है, it's not possible, बिल्कुल, but everybody is unique in their own way and we go to definitely. I think everybody for different purposes. pediatrics is a very enriched department in terms of consultants, the Yes, senior doctors. yes, What I personally very feel is experienced very, very consultants we experienced, have. very multi-dimensional or multi-talented, you can say always. When you want to challenge yourself, then you go to Bishar. He will just give blast you with the questions and you will start reading something. And it is good for you also. Yes, very good, very good. Right. So my next question is, if you have to explain Swami Dayanand Hospital in one word, what is that word? What would you use for this hospital? You have been gone through the 2 years of the experience in this hospital, so It's a good place for residency, at least in Department of Pediatrics that we okay, know. okay, And the pediatrics department generally as a specialty is known as a toxic department. okay, So I don't feel that kind of stuff here. great. A little bit of it's an Toxicity is less. no, a little bit of knicks happens everywhere Yeah, in it is all the happening. departments. Right. But that kind of that mindset that was there when we were going for residency and selecting our specialty branch. Mm-hmm. So that kind of thing I have not seen here. So I feel that it is a very good opportunity for budding pediatricians or aspiring pediatricians to come here and join the course. We will ask that. So my next question will be on the stipend and the college preferences, of course, during the time of the counseling. So we are going to ask them. Time of joining the college, what was in your mind that you have filled the choice of Swami Dayanand Hospital? Though there are many hospitals available, I'm sure at your rank at the time of counseling. So, what should be the preference? In other words, what should be a preference of a student having a good rank in PG entrance in Delhi colleges itself? How will you rank the Swami Dayanand Hospital? अगर सी फर्स्ट है कि आपको एमडी लेना है डीएनबी, तो Right. उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे कि एम मैं मेरा बताऊं तो जैसे मुझे एमडी मिल जाती, लेकिन साउथ रीजन में Peripheral में मिलती, आपके में state से बाहर होम टाउन मिलती। से बहुत दूर मिलती। Right. तो मेरे लिए वो नहीं था कि मुझे होम टाउन के नियर ही चाहिए था। फिर उसके बाद आप डीएनबी मिल जाती, वो भी दिल्ली में। स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और आप अप डाउन भी कर सकते हो होम टाउन। ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है, एकेडमिक्स अच्छी है। तो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके तो फिर स्वामी दयानंद। स्टाइपेंड कितना है डॉक्टर साहब? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए कि भाई स्टाइपेंड कितना है, कहाँ पे हम कैसे ज्वाइन करें, क्या मिलेगा हमसे? स्टाइपेंड आई थिंक दिल्ली में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड हमारे ऑल ओवर इंडिया ही है। आई थिंक सबसे ज्यादा स्टाइपेंड हमारे हॉस्पिटल का ही है। फर्स्ट ईयर को कितना मिल जाता होगा? अराउंड 1.2 1.2 लाख। अब अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो वो 20,000 हॉस्टल का कट हो जाता है, तो अराउंड 1 लाख मिलता है। 20,000 बाहर रेंट भी लगी जाता है। अगर बाहर ले रहे हो तो अराउंड 1.2 के अराउंड मिल जाता है। बढ़िया, ग्रेट। और ये हर साल इंक्रीज होता है? अराउंड 5 नहीं, ये टोटल रहती है, टोटल है, टोटल। ओके, ग्रेट। इन यानी हर ईयर अराउंड 5,000 इंक्रीमेंट होता है। ग्रेट। सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट स्टाइपेंड टू हैव स्टाइपेंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत एंड ग्रेट हॉस्पिटल टू वर्क हॉस्पिटलिटी विद, भी अच्छा है और एकेडमिक्स भी अच्छा है। एकेडमिक्स भी अच्छा है। सो हम लास्ट में अगर आपसे मैं पूछूं कि ये दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, दैट if you compare MD with DNB in Swami Dayanand Hospital, how would you rate it? मतलब what is your take on it? आप बताएं डॉक्टर साहब। एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली जैसे पीडियाट्रिक स्पेशली की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। राइट। आप यानी टाइम मिलता नहीं आपको कुछ भी, पढ़ाई का भी नहीं। फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिलता, और कंसल्टेंट और वो थोड़ा टॉक्सिसिटी वाला इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, टॉक्सिसिटी एज सच बिल्कुल नहीं है। सीनियर भी हेल्पफुल है, आपको कुछ भी डाउट हो कंसल्टेंट सीनियर से कभी भी डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। इवन पर्सनल कुछ आपको प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी सॉर्ट हेल्प करते हैं। स्टाइपेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और पढ़ाई में भी बहुत हेल्पफुल है। एकेडमिक्स भी अच्छा है, इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव है। तो अगर आपको ये है कि डीएनबी लेना है मुझे और दिल्ली है तो स्वामी दयानंद बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब लास्ट में आपका एडवाइस फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो अब पीजी करना चाह रहे हैं या पीडियाट्रिक्स में पर्टिकुलरली आना चाह रहे हैं, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम एंड इन रिस्पेक्ट टू आवर हॉस्पिटल और इन जनरल?
First of all, you need to decide whether you want to do a pediatrics or not. Right. I mean, if you are a, You if you are marry a, a branch yeah. actually. Yeah, So definitely. because once you are here, then there's no going back. है ना? That is true for every branch. Right. But pediatrics has its own problems, or what we can say, different set of Challenges, you can say. challenges which we Yeah. have, because here we have to counsel the parents Right. apart from treating the child, who cannot most of the time say what problem he has or he or she has. So that is one of the thing which is very challenging in pediatrics. You have to find out the problem. Right. Mother will say some things, but you will have to interpret Make it a other way way, out, make make a way a- out of right, it. right. So in that way, that is why the things are much more hectic here. And somewhere I saw a rating, how many doctors, which kind of doctors are in which kind of stress, who is most stressful. So we were somewhere around in the Pediatrician are on the tops. upper side, I think. हम टॉप में थे कहीं पर. So Yes, of course it happens, so but considering everything, once you have decided that you want pediatrics, and you have secured a good rank, MD will ensure you a good passing rate. DNB always have that issue, and nowadays they have structured the questions in that way that you are able to write something out of the questions, and the passing percentage is increasing. So, and as far as the experience is concerned, everybody knows that there is no disparity between the what a MD knows or what a DNB knows. right, In fact, you may know a more practical approach towards patients than MD students. obviously. Okay, because you are here working, right? Right. So that is one thing about And DNB. what about this hospital? This hospital is very good. We have DNB going on here for around more than 8 years, I Right. think. And may I know what was the passing percentage in the last batch? Last batch, How many total people you have? in total one batch? people, out of 6 people who appeared, 5 people cleared. 5 people cleared. That is Yes, a pretty good it's a passing very very percentage. good passing Right, percentage. right, right. And we have very nice academics. So I would say that finding a DNB where you have academics going on along with, it's a very difficult Choice, actually, choice. So here we have that. That is a very good thing. Chalo, great. चलो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी Thank मच you so फॉर much. ज्वाइनिंग Thank अस एंड इनलाइटिंग अस, और हमारे व्यूअर्स को भी आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. सो यस, दिस इज डॉक्टर सचिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन. होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.